Yes, good morning, students. Today we are going to start with ninth chapter, Madam Rides the Bus. Chapter number 8, and two poems given in between are deleted from the syllabus. They are not in the syllabus. So we have left chapter 8, Mijbil the Otter, and two poems, Trees and Fog. Both are deleted from the syllabus. We are going to start with chapter 9, Madam Rides the Bus. What we get in this chapter, anyone who can give the guess from the title of the story? Yes. A small child rides the bus by collecting 60 paise. Yes. And first he gives 30 paise to travel from village to town, and then she gives another figure. Yes. What we are getting in this chapter is a very interesting story. We are given a character of a girl of an 8-year-old who has her first bus journey. She has never traveled through bus. And in this chapter, what we are told that she was very excited to have a journey through the bus and how she managed to collect the money from her pocket money. She collected the money. She got knowledge about each and everything about the bus journey because her house was near that area where the bus stoppage was there. And she was very excited to know each and everything about that. She used to stand at the gate of her house and used to watch each and every activity happening on the bus stop, or the people talking there, those who were taking the bus or coming down from the bus. She just kept on listening them because she was not having any friend nearby. No child was there in her nearby area, in her street, with whom she could play. So this was her best pastime. She used to stand at the gate of her house and used to watch all the activities happening around, and from that she got so many new experiences. So what the idea the writer has conveyed in this chapter is that not only that what we know, there are many things which are happening around us from where we get experience. एक तो होता है ना, हमें किसी चीज की नॉलेज है, हम अपने हाथ से कोई काम कर रहे हैं तो हमें उससे एक्सपीरियंस गेन होता है. But sometimes when we watch here and there around in our surroundings, we get experience from that also. And it is the same idea which the writer has conveyed through this story, that when we watch others' activity, when we listen others, we get so many new things. We get knowledge, we get experience out of that. And this is one idea which is explained through the character of this girl. Then what is the other idea that is conveyed through the character of this girl? She traveled in the bus and she did not tell anything about this to her mother. Without taking into consideration or without talking to anyone, she took the decision. She took the decision of traveling in the bus. And this is another idea, that sometimes when we start taking our decision, we become mature and we learn many things also. But what happens when she traveled in the bus, on the way, she saw a cow that was running on the road, and it was just going to strike with the bus. But somehow the cow crossed the road. But when she came back, again she came back in the same bus, because her own purpose was only to travel and get the experience of traveling in the bus. She did not got down from the bus at the end journey, कि जहां तक बस ने जाना था, लास्ट स्टॉपेज जो था, सारे लोग उतर जाते हैं लेकिन वो बस से नहीं उतरती है. Even the conductor tried to tell her that she could have money from him and she could enjoy for some time till the bus is standing there. She can go to any stall and enjoy anything for eating. But she did not like this and she did not get down from the bus and came back in the same bus. वहां तक डेस्टिनेशन तक जर्नी करती है, उसके बाद वापस उसी बस में आती है. And what she noticed on the way coming back, that was the same cow had died.
somehow, and that gives her the reality of life. She came to know about the reality of death. It is not only the things that we live in this life, or what we see in the life, we enjoy in the life. She came to know that there is death also, something, and she came to know about this harsh reality. And then she becomes very sad. And she kept on thinking about it after coming back home. So, what idea it gives us that this story, her traveling or her encounter, it turns out to be an encounter with the harsh realities of life. She came to know about the harsh reality of life. It is not only the happiness, joy, and entertainment in life. Sometimes we have to suffer the bad things also in life. She realizes this thing. She comes across different scenes in that journey and realizes the presence of death, कि इस दुनिया में अगर हम रहते हैं, हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत कुछ गेन करते हैं, लेकिन हमें इस चीज की भी नॉलेज होनी चाहिए कि आफ्टर ऑल वन हैज टू डाई, एंड व्हाट इज डेथ. She came to know, otherwise a child of 8 years does not know anything about this thing. Through this incident, she came to know about it, and she sensitizes her to the world around. Knowledge लेती है, आसपास के दुनिया के बारे में इसको पता चलता है, and she learns that there is much in the world beyond our knowledge and experience. जो हमें knowledge है, हम सोचते हैं हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन उससे भी बढ़कर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी सराउंडिंग्स में हैपन होती हैं, घटनाएं घटती हैं, लेकिन हमें उनके बारे में नॉलेज नहीं होती. एंड वी गेट एक्सपीरियंस आफ्टर वॉचिंग दोज इंसिडेंट्स. After coming to know about getting the knowledge of those incidents, then we come to know that these things also happen in life. कि ऐसा भी होता है जिंदगी में. Because we have never faced, we have never seen, so we don't have any experience. But when we notice those things happening around us, then we come to know that these things can also happen in life. And that shows that we learn from our surroundings also. We get new experience from our surroundings. So the chapter gives us the mystery of life and death. And she tried to acknowledge the gap between the knowledge of death and its understanding. Earlier, she did not know anything about death, but when she had this journey, she came to know about the understanding of death also, the harsh reality of life, that is the ultimate reality of life. Yeah, this is the idea or the message which the writer has conveyed. Now, if you look at the book, see what they have given you in the very beginning, small activities given to you. In this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. Induction means an initial step. You can call it as introduction. She also get the introduction about death, about the mystery of life and death through this journey. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. एक तो होता है हमने सुना है कि डेथ होती है कोई चीज, लेकिन हम उसको अंडरस्टैंड कब करते हैं? when we face, when we see that reality happening in front of our eyes. So this is the gap which she acknowledges. She understands about the life, about the death through this journey. When she went for the journey, when she started the journey, she was very happy. But when she came back after this incident, she was very sad because she was thoughtful. She gained a new experience and was able to think about those things, what she had seen. Yeah, this is the idea which is given to you. Now see, look at the activity given to you. Look at the words and phrases given below. Then put a tick against the ones you think you will find in the text. According to the title, as I have told you, it is a bus journey. What phrases you feel that could be used in the chapter? Tick on those. And any phrase which cannot be used, find out that. There are different phrases given. A set of passengers can be used. Get off the bus must be there. Tickets please होगा because passengers को conductor जो है tickets भी देगा. A row of seats, no doubt there is there. Blowing a whistle,
Can be there. Conductor, usually they blow whistles. Get on the bus. Yes, phrase can be used. Platform. No. Platform is used for the station. On the station, we find trains, not the buses. It is bus stand. It is always called bus stop or bus stand. Platform is used for the station. A roar and a rattle can be there. शोर हो सकता है. कहीं पर ऐसी रोड हो सकती है जहां पर stones हों और rattling sound create हो सकती है. Then slowing down to a crawl can be used कि बस जो है वो तेज चल रही है और धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है. दिस फ्रेज कैन बी फॉर द ट्रेन ऑल्सो, इट कैन बी फॉर द बस ऑल्सो, कि जब कोई स्टॉपेज आने वाला होता है या कहीं पर कोई ऐसा ट्रैफिक वाला कोई रोड होता है तो उसमें थोड़ा सा क्रॉलिंग स्पीड के ऊपर भी बस या ट्रेन को लिया जा सकता है. नाउ नेक्स्ट इज यू मस्ट हैव ट्रेवल्ड बाय बस मोर देन वंस. I think it will not be a new experience for you. You all might have traveled in the bus. What can you see from a fast moving bus? Anyone who can share the experience? कि जब आप बहुत तेज बस चल रही होती है तो आप उसमें क्या फील करते हो? What can you see and what do you feel when you are moving in a fast moving bus? When we are moving in a fast moving bus, then when we see from our window, then the things appear to us blur. Because when the bus is moving very fast and we are not able to see anything properly. Yes, one point has come that when we are traveling in a fast moving bus, the things appear to us blurred. We cannot see the things clearly. Anything else? Surroundings are changing rapidly. Anything else? Yes? Cannot understand what you say? Yes? We feel that the trees are moving. Yes, yes. You might have read this in science also. When you are moving in the bus or in the train, हमें ऐसे लग रहा होता है कि जो बाहर की चीजें हैं, कोई बिल्डिंग्स हैं या कोई ट्रीज हैं, वो भी हमारे साथ साथ चल रहे होते हैं और ऐसे लग रहा है कि हम आगे की तरफ चल रहे हैं, वो पीछे की तरफ चल रहे होते हैं. यू फील लाइक दैट? होता है ना ऐसा, जब हम फास्ट मूविंग बस में चल रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो बाहर की जो सराउंडिंग्स हैं, जो भी चीजें हमें नजर आ रही होती हैं, आउटसाइड सीनरी, वो भी हमारे साथ मूव कर रही है, लेकिन हम आगे की तरफ चल रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ मूव कर रही हैं, वो भी तेजी से चल रही होते हैं. दिस यू माइट हैव रेड इन साइंस. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? एनीवन हु कैन टेल मी द रीजन फॉर दिस? Relative motion. Relative motion between trees and the bus. Yes. When the bus is moving, then the trees relatively move with the bus. It is some relative motion term in your science. Okay, theory of relativity. Maybe get it clear from your science teacher and then let me know tomorrow. We have science period today? Science period है? No, ma'am. Theory of relativity is studied in physics. Okay, you don't have physics period today? No, we have it on Monday. Okay. You can talk to your other science teacher also. They will also tell you for this. Okay? Try to find out the reason and then let me know also what is the actual reason behind that. Even behind the blurring of the side things, there is also theory of relativity involved. When the things move with a very high velocity, then the distance or the length contracts. So this is the velocity. It is something about velocity. Yes, ma'am. Okay. Okay, okay, very good. That means you know about this and you have read in science. Now, after this, they have given you some suggestions. They say speak briefly about some of these scenes or about other such scenes that you have seen, or write a sentence or two about them. They have given you some words just to give you the vocabulary which can be used for this paragraph writing. Rivers, green fields, hills, roadside shops, marketplaces, railway tracks, moving trains, vehicles on the road, trees, a crowd, clothes in shops, animals. These words can be used to explain the outside scenes, to share your experience. Try to write a few lines, 4 to 5 lines at home. Tomorrow we will discuss.
Clear? Explain about any of your journey which you have already taken, and accordingly what you saw outside, explain about those particular scenes or any other thing which you felt like that. You can use these words which they have given you in the box. Clear? Now let's go for the chapter. You can see on page 117. First, we are given about the introduction of this girl. It says there was a girl named Valyamai, underline her name, who was called Veli for short. In short, she was called as Veli. She was 8 years old and very curious about things. Underline her age. She was 8-year-old and she was very curious about knowing new things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house. और बहुत उसका फेवरेट बेस्ट पास टाइम क्या था? पास टाइम मीन्स कैसे वो अपना टाइम व्यतीत करती थी, उसकी एक तरह से जिसको आप कह सकते हैं ना हॉबी की तरह ही थी. शी यूज्ड टू स्टैंड एट द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. क्या देखती रहती थी कि गली में आसपास क्या हो रहा था. देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट बिकॉज देयर वॉज नो चाइल्ड इन हर स्ट्रीट ऑफ हर एज, कि उसकी एज के बराबर का कोई भी बच्चा गली में नहीं था, इसलिए उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे. एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू. सो शी डिड नॉट हैव एनी प्ले और गेम टू प्ले, एंड she used to stand at the door of her house and watch the activities happening around. That was the only game she used to have. But for Valley, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. बाकी बच्चे जैसे कोई भी games खेलते हैं, this was just like the as elaborate and enjoyable game as other games for the children. She enjoyed it very much. Watching the street gave her many new unusual experiences, and she did not enjoy these things only like the games, but she got very unusual experiences also. नए experience, नए अनुभव जो थे उसको गली में अपने घर के गेट के ऊपर खड़े होकर इधर उधर देखने से जो happenings थी around in the surrounding, she learned and she came to know about many new things. She got a lot of experience. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. The most fascinating thing, very attractive thing for her, जो चीज उसको बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी, that was the bus that traveled between her village and the nearest town. कि उनके गांव से पास के टाउन में एक बस जो थी वो वहां से डेली क्रॉस करती थी. इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक. और उसकी गली में से, मतलब उसके घर के आगे से गली में से बस क्रॉस करती थी आफ्टर एवरी आवर. हर घंटे के बाद बस आती थी, एक बार वो जाती थी और उसके बाद बस वापस आती थी. तो गोइंग एंड कमिंग बैक आफ्टर ईच आवर शी यूज्ड टू वॉच दैट बस. The sight of the bus, filled each time with a new set of passengers, was a source of unending joy for Valley. And the sight means दृश्य. एक तो तरह see, देखना, उससे क्या ये बना हुआ है? What is this form? Verb से क्या बना हुआ? अगर हम see verb लेते हैं तो what is sight? It is used as a noun. The sight of the bus, कि उस बस का जो दृश्य था, filled each time with a new set of passengers. It's quite natural कि every time new passengers were there in the bus. Same लोग तो होंगे नहीं एक रूट में. जब भी रूट नेक्स्ट बस का रूट आता तो उसमें नए passengers होते. Was a source of unending joy for Valley. That was the greatest source of happiness for that girl Valley, because she used to watch every time new passengers in the bus. Day after day, she watched the bus, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even if just once. और जैसे जैसे वो रोज डे आफ्टर डे मीन्स डेली वो इस बस को देखती, वहां से लोगों को, पैसेंजर्स को बस में क्रॉस करते हुए देखती, तो स्लोली शी हैड अ विश इन हर हेड. उसके माइंड में, उसके दिमाग में भी एक इच्छा, डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर जो है पैदा हो जाती है. एंड व्हाट इज दैट? दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर. व्हाट वाज हिज विश? शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस. कि वो क्या चाहती थी? कि वो भी बस में एक बार सफर करे, चाहे कि उसको एक ही बार मौका मिले. शी हैड दिस स्ट्रॉन्ग डिजायर.
This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. और ये डिजायर उसकी और ज्यादा स्ट्रांग होती गई और इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई कि इट वाज ओवरवेलमिंग दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. इतना ज्यादा उसका ये पैशन जो थी एक स्ट्रांग डिजायर बन गई कि वो किसी तरीके से बस में सफर करे. वैली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस. और क्या करती वो वैली जो थी वो लगातार उन लोगों को देखती रहती. Wistfully means longingly, with strong desire. She kept on looking at those people who were traveling in the bus, who got on or off the bus, कि जो बस में अंदर जाते और बस से नीचे उतरते. Got on means अंदर जाना and off means नीचे आना. When it stopped at the street corner, कि जब वो स्ट्रीट की कॉर्नर के ऊपर बस खड़ी होती और उसमें से बहुत से लोग बस में चढ़ते या उतरते तो वो उन लोगों को बड़े ध्यान से और बहुत लॉन्गिंगनेस के साथ, दैट मीन्स हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर कि वो भी इस बस में चढ़े और उतरे, ऐसी डिजायर उसके माइंड में आने लगी. और शी केप्ट ऑन लुकिंग एट देम. देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स. और उनके चेहरे, उन लोगों के पैसेंजर्स के चेहरे जो थे, दैट स्टार्टेड क्रिएटिंग फ्लैश ऑफ होप and desires and dreams in her mind. कि उन लोगों के चेहरों को देखकर उसके माइंड में भी एक सपना सा आता, एक उम्मीद जागती कि वो भी बस में कभी सफर करेगी. That was a strong desire that she created in her mind. If one of her friends happened to ride the bus and try to describe the sights of the town to her, Veli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. कि अगर कोई भी उसका नोन पर्सन, उसका फ्रेंड या उनका कोई नेबर, कोई भी उसका नोन आदमी बस में सफर करके आता और उसको डिस्क्राइब करता साइट्स के जो भी सीन्स उसने देखे या उस ट्रैवलिंग के बारे में या टाउन के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन करता, तो शी स्टार्टेड फीलिंग जेलस फॉर दैट. उसको अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो खुद नहीं जा पाती थी. सो दैट इवन मेड हर डिजायर मोर स्ट्रॉन्गर. Desire became more stronger when someone comes and tells her about the visit and about the town. Veli would be too jealous. Note down this phrase, too jealous. मतलब इतनी ज्यादा jealous हो जाती to listen. कौन सा ये ग्रामर का पार्ट देखिए कौन सा यूज किया गया, too jealous to listen. TOO in the form of adverb and to listen infinitive form. This is to infinitive form is used. So in this way, Valley would be too jealous to listen and would shout. और वो चिल्लाते हुए आगे से क्या कहती in English? Proud, proud. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word. और ना उसको खुद समझ होती कि वो क्या कह रही है और ना ही उसके फ्रेंड्स को बात समझ आती कि वो क्या कह रही है. Why she used these words proud? मतलब उसका कहने का मतलब क्या है, आप अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हो कि आपने विजिट करी बस की, कोई बात नहीं मैं भी जाऊंगी. मतलब ऐसे जैसे एक बच्चा चैलेंज करता है ना, तो in that way she also started doing. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. लेकिन वो उसको एक स्लैंग की तरह, स्लैंग होता है विथ नॉट क्लियर मीनिंग, गिविंग नॉट क्लियर मीनिंग, जैसे आप किसी को टॉन्टिंग वे में कोई वर्ड यूज कर लेते हो, तो इन दैट वे दे गिव द एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल एंड they felt like that. Over many days and months, Veli listened carefully to the conversation between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. Now see how she collected the information. She, for many days and months, she listened carefully to the conversation of the people. जो भी बस में उतरते या चढ़ते लोग जो भी बातचीत कर रहे होते, उनकी आपस में conversation जो भी होती, वो उनको सुनती रहती. And people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. और इधर उधर लोगों से भी कुछ वो questions पूछती. Discreet means very careful questions. उसके mind में कुछ ऐसे questioning आती, queries आती, तो उसके बारे में वो उन लोगों से पूछती जो भी बस से उतरते या चढ़ते, पैसेंजर्स जो भी होते थे. This way she picked up various small details about the bus journey. तो इस तरीके से उसने क्या किया, उसने उस बस जर्नी के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन जो थी वो कलेक्ट कर ली. एंड the town was, अब क्या information उसने collect करी, that is being told to you in the next lines. The town was 6 miles from her village. पहली चीज उसको क्या पता चल गई कि जो टाउन है वो उनके विलेज से 6 मील्स की दूरी पर है. The fare was 30 पैसा one way, और उसका किराया, fare, note down the spellings, FARE, fare, FAIR नहीं है. What is that fare? मेला, मेला लगता है जब गैदरिंग होती है, या आप कई बार फेयर गुड को भी कहते हो, अच्छा काम किया हो तो हम कहते हैं फेयर.
नाइस, ठीक है। तो इस तरीके से फेयर हेयर दिस मीन्स द चार्जेस फॉर द टिकट, कि जो किराया वो देती थी। द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे, और उसने सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या कलेक्ट करी कि अगर उसको जाना है तो उसको एक तरफ का बस का किराया कितना देना पड़ेगा, 30 पैसा, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि उसको लगा कि कुछ भी नहीं है। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से बट टू वली who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune, and which is according to her it was nothing, because she might be getting some pocket money. And she heard one well-dressed man say but to Valley, who scarcely saw that much money from one month to the next, कि एक महीने से दूसरे महीने के बीच में वो इतना पैसा बचा सकती थी. She felt like that, and it seemed a fortune, और उसको लगा कि it was her good luck that the fare was not much. The trip to the town took 45 minutes. Or how much time is taken? 6 मील की दूरी पर है टाउन, 30 पैसा उसको एक तरफ का किराया देना है, और 45 मिनट्स में उसका जो है रूट ट्रिप जो है वो टाउन तक पूरा होगा. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसा, she could return home on the same bus. तो उसने क्या सोचा कि अगर वो जाती है बस में ट्रेवलिंग करती है तो उसके बाद क्या होगा, वो बस में ही बैठी रहे अगर और वापस आए तो उसको 30 पैसे फिर देने पड़ेंगे. एक साइड का किराया 30 पैसे थे, सो शी हैड टू स्पेंड 60 पैसा. शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस एंड शी प्लान्ड दैट शी वुड पे 60 पैसा एंड शी वुड कम बैक इन द सेम बस. दिस मेंट that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. See the calculation she has done कि वो 1 बजे वाली बस लेगी. She could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and 45 मिनट्स का रन है तो 1 बजे बस चलेगी और 1:45 पे वो वहां पहुंच जाएगी और वहां पर थोड़ा सा स्टॉपेज होगा बस का, एंड देन शी वुड बी बैक इन द सेम बस एंड शी वुड रीच अबाउट 2:45. ठीक है, उसने 45 मिनट का रन दोनों साइड्स का ले लिया और 1:45 पे पहुंचे, 15 मिनट्स का वहां स्टॉपेज लिया और 2 o'clock बस चलेगी. शी विल बी बैक बाय 2:45. सो ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स. तो इस तरीके से क्या हुआ, वो सोचती रही. ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, मतलब उसके माइंड में ये सोच विचार चलती रही. एज शी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड, नोट डाउन. शी वाज सो कैलकुलेटिव अकॉर्डिंग टू हर कैरेक्टर. शी वाज सो कैलकुलेटिव एंड वेरी वेल प्लानर. बहुत देर तक वो इसी बात को कैलकुलेट करती रही. उसने रीकैलकुलेट करा एंड देन she planned and then replanned all these things in her mind ki what she would do. Clear? This was just her planning and about her character that we are told in these lines. Please find out the questions given at the back. We'll discuss it tomorrow. Okay? Then what happened after this? Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," and a tiny hand was raised commandingly. क्या हुआ? After this calculation and the planning, she found one day, spring day, and in the afternoon, she was there to catch the bus. And when she noticed that the bus was just on the point of leaving the village, जैसे उसने देखा कि बस वहां से चलने लगी है विलेज की तरफ से, and turning the main highway, मेन रोड के ऊपर जा रही थी, when a small voice was heard. Small voice means उसकी वाली की वॉइस थी, बच्चे की आवाज जो थी. स्मॉल यहाँ इट रेफर्स टू द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड, कि उसकी आवाज जो थी वो सुनी गई. और क्या आवाज आ रही थी, क्या बोल रही थी? स्टॉप द बस, स्टॉप द बस. आवाजें लगा रही है कि बस को रोक दिया जाए, बिकॉज शी ऑल्सो वॉन्टेड टू गो ऑन द बस, कि वो भी उस बस में चढ़ना चाहती थी, तो इसलिए उसने आवाजें लगानी शुरू करी. एंड A tiny hand was raised commandingly, और उसने अपना हाथ ऊपर उठाया ऐसे बस को पकड़कर चढ़ने के लिए. commandingly, that means boldly, बहुत bravery, जैसे किसी को ऑर्डर करते हुए उसने आवाज दी, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस. बच्चा था लेकिन उसकी आवाज ऐसे आ रही थी as if she was ordering someone, commanding someone. The bus slowed down to a crawl. Note down the phrase used,
which we have read in the beginning. एक्टिविटी में आपको phrases दिए गए थे. This phrase was used. बस जो थी वो धीरे धीरे स्लो हो गई. क्रॉल समझते हो ना, जैसे बच्चा रेंगता है जमीन के ऊपर. छोटा बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है वो पहले रेंगता है, क्रॉल करता है, तो ऐसी बस जो थी वो धीरे धीरे क्रॉल करते हुए स्टॉप हो गई. एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड, हरी देन, टेल whoever it is to come quickly. कंडक्टर को लगा कि कोई नजर तो आ रही रहा, वहां कौन है जो बस में चढ़ना चाहता है, तो उसने कहा कि जल्दी करो, जिसको भी बस में चढ़ना है जल्दी चढ़िए. इट इज मी, शाउटेड वैली, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन. तो वैली आवाज देती है, कहती मैं हूं यहाँ पर, मैं बस में चढ़ना चाहती हूँ. बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डोंट से सो. The conductor was very surprised to see, और उससे पूछता है तुम जाना चाहती हो बस में, सच में तुम चढ़ना चाहती हो? You don't say so, कि ऐसा तुम नहीं कह सकती. बहुत कमांडिंग साउंड थी, जैसे कि बहुत ऑर्डर की आवाज में उसने कहा वो बस स्टॉप करने के लिए. Yes, I simply have to go to a town, said Valley, still standing outside the bus. अभी भी वो बस में खड़ी है और उसको क्या जवाब दे रही है कि मुझे टाउन जाना है. And here is my money. She showed him some coins. उसको लगा कि कंडक्टर उसको शायद बस में नहीं चढ़ाए बच्चा समझकर, और उसको पैसे दिखाती है कि ये लो मेरे पास पैसे भी हैं. She showed him some coins. उसको coins दिखाती है, पैसे दिखाती है कि मेरे पास पैसे हैं. Okay, okay. But first you must get on the bus, said the conductor, and he stretched out a hand to help her up. और कंडक्टर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हेल्प करी बस में चढ़ने के लिए, और उसको कहते हैं कि पहले बस में चढ़ो फिर पैसे देना. Never mind, she said, I can get on by myself. See the commanding nature and the confidence of this girl of 8 years. उसको आगे से कहती never mind, I can get on by myself. कि आप टेंशन मत लो, मैं अपने आप बस में चढ़ सकती हूँ. You don't have to help me. मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है. The conductor was a jolly sort, fond of joking. Note down, underline this point. The conductor was also very good-natured man. He was having jolly sort means fond of joking. He was in the habit of joking to people. बहुत हंसी मजाक करता था. He said, "Oh, please don't be angry with me, my fine ma'am." He said, "Here, have a seat right up there in front. Everybody move aside, please. Make way for ma'am." और बड़े रिस्पेक्ट के साथ उसको मैम कहते हुए वो एंटर करवाता है बस के अंदर, और सबको कहता है कि पीछे हट जाओ, उसको रास्ता दो, सीट दो, हमारे मैम आए हैं, इनको बैठने के लिए जगह दो. डोंट गेट एंग्री. उसको समझाता है कि आप गुस्से मत हो, और बड़े रिस्पेक्ट के साथ उसको बस के अंदर लेकर आता है. एंड अकॉर्डिंग टू द टाइटल, हु इज कॉल्ड एज मैडम? Valley. Valley is called as madam, and it is her bus journey that is explained to us. It was the slack time of day, and there were only 6 or 7 passengers on the bus.